a biggest customization order that I had was Naitik Nagda in the first year itself. तो मैंने पहले मम्मी पापा को बोला कि ओके आई हैव अ टेक्स्ट रोल, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, उनके मार्केटिंग में से किसी ने किया होगा और अ पीए और समथिंग, इग्नोर इट और सी व्हाटएवर। तो मुझे आ गया गुस्सा, मैंने बोला ऐसा नहीं है, वो खुद ही है, वो ही मुझसे बात कर रहे हैं। और मेरी एक सारी अक्षय कुमार की एक मूवी के प्रीमियर के लिए भी गई थी, द साइड कैरेक्टर वाज वेयरिंग इट। ये तो छोटी छोटी चीज है जो हुई है। फिर देयर इज अ कंटेंट क्रिएटर सुखमनी गंभीर जिसको मैंने भेजी थी एक सारी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट। कोई होगा तो एक बार शायद पहन के ना भी पहने, बट शी एक्चुअली यूजेस इट, सो द प्रोडक्ट इज गुड। हे गाइस, मैं हूं चैतन्य नवाथे, आपका होस्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सीजन 3 ऑफ अबव द एवरेज। सीजन 3 इज गोइंग टू बी सिमिलर टू सीजन 1 and 2। 10 एपिसोड्स रहेंगे, 10 गेस्ट्स, 10 डिफरेंट करियर्स एंड फील्ड्स। द ओनली डिफरेंस इज इन पर्सन पॉडकास्ट। आई एम रियली हैप्पी विद इट। सब शूटिंग एडिटिंग सब बहुत क्विकली एंड बहुत अच्छे से हुआ, बट ड्यू टू ऑल ऑफ दिस बीइंग सो क्विक एंड फास्ट एंड एवरीथिंग, I have not been able to shoot any intros for every episode, so यही intro आपको हर बार दिखने वाला है। So अगर आप ये 7वीं 8वीं 10वीं बार देख रहे हो तो go skip, let's go into the episode. Hello and welcome to this episode of Above the Average Season 3. Today with me I have Neeti Gangar. Hi Neeti. Hi Chaitanya. So Neeti is a business owner, entrepreneur and a fashion designer. Yes. Further, I'll let you introduce yourself. Okay. So I'm Neeti Gangar and I'm proudly the owner of Asanjo. I did my graduation from Whistling Woods International, that's in Goregaon, and then I started my label during the same college period. So I always wanted to graduate wearing my own label. Okay. That's how the thing started a little early, and I wore a blazer that had Asanjo on it, and that's how I graduated. So Nice. this is a fun bit, and I've always wanted to do fashion. That's because I've heard my mom that heard her saying a lot about fashion and how she wanted to become a designer but didn't have the support so much at that time. And dad being a businessman of real estate and properties and cars, I've always seen him do a lot of deals and crack a lot of them. So I've seen the business side also, and the creative comes from mom. So that's how I always knew that this is something I want to do and not a job in particular. Okay. Nice. So when you joined Whistling Woods, even at that time you knew कि मुझे यही करना है. हाँ, मतलब ऐसे पापा से हमेशा सुना था कि जॉब मत करना, लाइक फॉर एक्सपीरियंस इट्स ओके, बट यू नो डू हैव योर ओन थिंग, टेक द रिस्क ऑफ डूइंग दैट, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। तो वो हमेशा से ही था। एंड वी वर द कोविड बैच जब हम लोग पढ़ रहे थे, 3 years का डिग्री था, एंड हमारा कोविड में था, सो लॉट ऑफ टाइम हम घर पे थे, तो असाइनमेंट्स घर से करने होते थे। उसमें एक इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था कि टेक डेनिम एंड मेक एनीथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। तो मैंने बनाया एप्रन, मैंने एक पुरानी डेनिम ली पापा की, एंड आई मेड अ एप्रन आउट ऑफ इट, किचन में जो यूज होता है पेंट करते वक्त। एंड देन आई पोस्टेड इट कि ये मैंने बनाया है, और कोविड था तो मैंने डाल दिया कि इफ एनीबडी एल्स वांट्स सच एप्रन, सबके घर में पुरानी जीन्स पड़ी होती थी, फटी हुई पड़ी होती थी, तो मैंने डाल दिया। had a good response. फिर बहुत सारा इससे मतलब recycle हुआ denim, which was again a good cause. So the college was super happy that I'm doing something like this in COVID with proper safety and everything. और फिर denim से फिर मैंने उससे skirts भी बनाना शुरू किया old denim से. Okay. Then sling bags. So whatever wastage there was made to use in a very nice way. So I still have a lot of pictures and folders of people wearing those aprons and doing everything. तो वहाँ से ही वो स्टार्ट हो गया था कि अंदर एक एंटरप्रेन्योर जैसे कुछ
अपना ही करना है. So I used to go around everyone, take the denims, cut it, paint it, do some art on it and give it back. वो बहुत ऐसा मिनिमल कॉस्ट पे मैं बोली थी, ओके गिव मी 200 300 व्हाटएवर टू डू दिस. उसमें स्टिचिंग भी होती थी, तो वैसे स्टार्ट हुआ था. एंड देन हाँ, उसके बाद आई ऑल्सो डिड दिस टाई डाई बाय नीति, wherein I used to get t-shirts from Decathlon और मेरे पास एक tie dye kit था. This was also around COVID only, after denim. तो मैं खुद बैठ के एक एक टी शर्ट बनाती थी. उसके भी ऑर्डर्स होने लगे. फिर वो लेडीज की किटी पार्टी पूरा बड़ा ऑर्डर देने लगी कि यू नो मेक टी शर्ट्स फॉर अस. वैसे तो ईच टी शर्ट आई यूज्ड टू डू बाय माई सेल्फ. फिर वो न्यूज़पेपर में पैक करना. सो ऑल ऑफ दैट. सो Asanjo has not directly come to the dream was so that एक स्टेप वाइज हो गया है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके फिर मुझे पता था आई एम रेडी टू नाउ expand and do something that I've always dreamt of. Nice. So this was during college. Yeah. Wow. So firstly, while you were in Whistling Woods, what was the degree? So it was BA in fashion design. Okay. And we had really cool subjects like सिर्फ fashion नहीं होता था, हमें makeup भी सिखाते थे. हमें कैसे कम्युनिकेट करना, हाउ टू बी प्रॉपर, वो सब भी था सब कुछ. वी ऑल्सो वर टॉट एक कुछ मास्टर क्लास था ऑन कैमरा हैंडलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो फोटोग्राफी भी. सो वी वर मेड टू डू एवरीथिंग. तो इफ यू आर टू डू अ प्रोजेक्ट अलोन, यू शुड नो हाउ टू groom yourself, how to present yourself, how to shoot that, everything. Okay. So that was interesting, but we lost a lot of time during COVID. So distance learning ही हुआ था. तो stitching is something that I'm not very strong at, so that's why I have a good master G for it. Acha. Okay. Nice. So you learned the skills in your college. You applied them. But जो अप्लाई किए वो डेनिम एंड टाई डाई थे. बट असांजो इज मोर अबाउट एथनिक वेयर, राइट? हाँ, it's about customization, be it anything, but because we're in India and we love a lot of ethnic wear and we mostly customize that a lot क्योंकि western wear is available बाहर. तो इसलिए वो है. But otherwise if you get me a design and tell me कि ये कराना है, then I'll make sure it's done. So it can be anything ऐसा. Okay. तो एथनिक वेयर का फिर कैसे स्टार्ट हुआ? हाउ डिड असांजो स्टार्ट? हाँ, दिस इज द बिट कि वो पहले असांजो एकदम से नहीं हुआ था. अराउंड नवरात्रि आई हैड वोर्न अनारकली दैट वाज बैकलेस एंड इट हैज अ नाइस डिजाइन. तो मैंने उसमें अगेन द सेम थिंग, सोशल मीडिया हियर हैज बीन वेरी पावरफुल एंड हेल्पफुल इन ग्रोइंग. तो डाला फोटो कि इफ एनीबडी वुड लाइक टू कस्टमाइज समथिंग लाइक दिस बिफोर नवरात्रि, आई एम टेकिंग दैट अप. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड नोन जो थे, दे सेड ओके यू मेक इट फॉर अस. तो वो पोस्ट करना शुरू किया. वो बहुत लव उस पे रिसीव हुआ. तो देन आई सेड ओके ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं. एंड दिस वाज आल्सो अलोंगसाइड कॉलेज. तो मैं पढ़ाई तो कर ही रही थी, बट मुझे साथ में कुछ ना कुछ और करते रहना, आई थिंक द टेस्ट ऑफ मनी, आई डोंट नो, वो जो लग गया था बीच में. तो कुछ तो करते रहना है ऐसा. तो फिर वो स्टार्ट हुआ. And there's also a fun, memory of how the name came up, because a lot of people don't know what Asanjo is. It sounds good, but they don't know what it means. So me and my friend, my best friend Anchal, were on a call at 3 a.m. in the night. और मैं उससे बोल रही थी कि I'm starting this, now what do we name it? So I wanted to be culturally rooted, और मैं खुद I'm a Kutchi and Gujarati, so I wanted something that at least my family, my audience, तब तक उतना ही लिमिट तक मैं सोच पा रही थी, they should be able to relate it. तो फिर असांजो मीन्स आर्स, हम सब का, इन द लैंग्वेज कच्ची. जेठालाल पता है कौन है? Of course. He is a कच्ची, so that's असांजो. हाँ, तो फिर वैसे तो आई टोल्ड हर कि हाउ डज असांजो साउंड. सो मैंने 2-3 बार रिपीट किया होगी असांजो बाय नीति गंगर, एंड शी सेड या इट साउंड्स गुड. तो अगले दिन कैनवा पे लग गए बनाने, नाम वाम लिखा और स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पेज. एंड आई रियली वांटेड माय डैड and parents especially to be happy with the name. So when I told them, they were really taken aback कि ये कैसे सोच लिया ऐसे. Okay. तो हाँ. Wow. So next you did firstly वो ethnic wear का start किया. You started selling customized हाँ. अनारकली.
हाँ मतलब I just put कि हाँ ये है and now you can customize anything, so you can get me your old sarees or you can tell me to source. उसके ही बाद में दिवाली आई, तो तब मैंने थोड़ा और कॉन्फिडेंस करके डाला कि अभी मैं दिवाली के बहुत लिमिटेड आउटफिट्स कर रही हूँ, सो आप जल्दी जल्दी आ जाओ बिकॉज फिर मैं नहीं लूँगी ऑर्डर्स वैसा. Okay. तो आई एम टेकिंग 2-3 मेंसवेयर ऑर्डर्स ऑल्सो वैसे. तो उसमें भी कुछ कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ऑब्वियसली बोला. द मैं स्कूल में भी ना लास्ट पेज पे ऐसा स्केच करती रहती थी कुछ ना कुछ. सो लॉट ऑफ पीपल अराउंड जिनको पता है कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस, वो मेरे दोस्त है. तो दे वर ऑलवेज देयर कि हम तो कर ही रहे हैं, और बाकी और न्यू लोग थ्रू इंस्टाग्राम आने लगे. एंड देन दिवाली वाला ऑर्डर्स हैपेंड, दैट ऑल्सो अच्छे से उसका मतलब उस पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था. अ लॉट ऑफ पीपल मेड आउटफिट्स इन वाइट, तो वो तभी बहुत चल रहा था कि हाँ वाइट पहनना है. Okay. देन लखनवी कलेक्शन केम इन बाय असांजो, ऑल ऑफ दैट. तो फेस्टिव्स वर माय पीक ऐसा टू बिगिन विद. Wow. We'll go into collections. उसके पहले I want to know कि इस point पे you were using your skills. You started using your skills. तो वो skills क्या क्या थे? हाँ तो अभी मैं सब कुछ A to Z खुद से कर रही थी. When it comes to a label, you have to first talk to the client, discuss what their design is, what they want to get done or customize. तो वो होने के बाद and you have to verify of course that the client is genuine and everything, क्योंकि बहुत बार they talk and then पता चलता है कि वो कोई है नहीं, and then it's just a waste of time. तो पहले नोन्स में ही करो. I'd suggest in your family, friends, उनके लिए डिज़ाइन करो. So talk to them. Then the sourcing part comes in, that if they have an inspiration or a reference, तो वो आपको बोलते हैं मुझे ऐसा कुछ चाहिए, से मुझे ये आलिया भट्ट वाली साड़ी चाहिए. So then you go for your sourcing. That's the first step. कि नहीं, first could be your measurement also. एक बार design हो गई, you take the measurements, then you leave for sourcing. You show them multiple options, explain the fabric to them because they are very new, they don't know. You know the best at this point. तो आप बताओ क्या है. And then I also make sure that I'm doing something in the budget. If I want to say कि okay, if you take this could be better, then I'll suggest that. But end of the day, they have a budget and we'll work around that. After the sourcing is done, you send it to the master G that you have. वो होने के बाद जब बन के आता है, you have to then do the measurements, which I do. Fitting session. उसमें भी अब तक ऐसा हुआ है कि 99% of the time the fitting has been perfect in the first trial. Okay. So I'm blessed with a really nice skilled tailor who does his job really well. तो वो हो जाता है, the client is happy. Then where my extra effort comes in is मैं reels बनाती हूँ. I make sure that the client feels the most special person at that time कि हाँ मैं अभी सबसे ज़्यादा special हूँ, that homely treatment और perfect fitting भी है, so he's happy or she's happy. And then my home is my studio, so I serve something to them. तो ऐसा मतलब बहुत ही homely family वाला vibe मैं create करती हूँ. All of this I like doing. You can have a different way of going about it, but yeah. Nice. So in this itself, this process itself, communication was one skill, sales was one skill, like communication में आता है. Then obviously the fashion का fitting and I guess the designing and all that, and social media. Yeah. So it's like multiple skills you're using at the same time. And it's fun. Nice. So I guess that's one of the biggest learnings for anyone who wants to do something like what you're doing, like Asanjo, कि multiple skills तुम्हें develop करने पड़ेंगे. Yeah. Right? Yes. So I'll tell you one thing. पहले ऐसे एक ग्रुप था सोसाइटी का. I used to put my stuff on that कि ऐसे, तो मुझे डांट दिया कि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए, like don't put this here. तो I got a little nervous कि अब मैं कहाँ डालूँ, मैं कैसे दिखाऊँ लोगों को, क्योंकि बहुत लोग इस पे नहीं थे इंस्टाग्राम पे. तो देन वी क्रिएटेड, मुझे किसी ने बोला कि आप खुद का ग्रुप शुरू करो असांजो का. तो वो एक पर्सन से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये तो सोसाइटी वाले ग्रुप है और थोड़े आउटसाइडर्स है उसमें. तो नाउ दैट ग्रुप हैज अराउंड से 150 लेडीज इन इट. और मैं और भी ऐड कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू लाइक पुट एवरीवन इन दैट. वो सेग्रीगेट होता रहता है. तो दिस इज वन लिटिल थिंग कि वो इट शोज अ लिटिल ग्रोथ कि ओके नाउ पीपल आर लविंग व्हाट आई एम डूइंग, दे वांट टू सी न्यू थिंग्स एवरी डे.
तो वैसे और फिर इंस्टाग्राम तो है ही, देन यू हैव टू टारगेट फेसबुक. तो सोशल मीडिया इज द की हियर. यूज इट टू द मोस्ट दैट यू कैन इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग घर से या ऑन अ स्मॉल स्केल वैसा. Nice. घर से you said, so that Hmm. brings me to my second, the next question. Fashion and all this includes kapde Hmm. and all the designing के लिए Hmm. like all the material, Hmm. and you do that at home. Hmm. तो वो manage कैसे करते हो? वो मेरा रूम आप आके देखोगे तो वो मेरा नहीं रहा है. एक आधा वार्डरोब सिर्फ मेरे कपड़ों का, बाकी पूरा फैब्रिक्स, ट्रिम्स, उन सब चीज़ों का है. बट द स्टिचिंग एंड एवरीथिंग एंड द कटिंग डज नॉट हैपन एट माई प्लेस, दैट हैपन्स एट द टेलर्स यूनिट. तो मुझे सिर्फ सब कुछ पैक करके उसमें मेजरमेंट शीट देके, डिज़ाइन शीट देके उनको भेजनी होती है. आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू हिम एंड देन द वर्क इज डन देयर. फिर रेडी गारमेंट बन के आता है. तो बट स्टिल द room is a mess that I try to keep clean as much as I can. Okay. Going forward, what do you plan to do with Asanjo ahead? अभी से. So my dream is really to make it worldwide and not just in India. मतलब obviously India में though I want to reach everywhere and we are reaching. Currently someone in Chennai is wearing Asanjo. Someone in Delhi is wearing Asanjo. तो उतना reach है. Someone in Pune. तो वहाँ तक पहुँचा है. Slowly we'll be able to go a lot beyond that. And now I've also done a few deliveries in Australia. Like a lehenga for a bride. उनकी घर की पूजा थी during Wow. her wedding. तो she is now based in Australia, but वो इंडिया तभी आई थी. तो ये सब one in Canada. Then someone sent something from मतलब purchase something from Asanjo and send it to US. तो अब मुझे ये भी है कि वहाँ के Indians को how can I target them also, and I just want the name to spread. कि Nice. you know that yeah, Asanjo will do anything that you say. And because we're doing it online, I try to make it very easy, the process of fittings. As I said, कि mostly issue नहीं होता है 99% of the time. So that is something that can be done, but I'm looking forward to how I can do it now. अभी तो क्योंकि 2 साल ही हुआ है, I have to put more time into this, maybe make a studio or something, and then I don't know what will help, but that plan of action still has to be there. But this is the aim, end of the day. Okay, sir. Nice. What tips can you share to someone who wants to do something like Asanjo? Not just in fashion, maybe in some other industry, कोई और product. But Sorry. okay. Maybe not in fashion, maybe in any other product. What would you want to share to them? What tip would you give them? So, what I have figured about me very recently is कि मैं कुछ भी बेच सकती हूँ. मुझे Okay. कुछ भी दे दो. Okay. मतलब अभी we are recently doing a Asanjo Kutch collection. So I have artisans in Kutch who make the locals and they make products for me. A few I design, a few they design, and then I've been doing this sale अभी 3 महीने से, and people are loving it. The cotton, it does not shrink, so that is one USP. आप कहीं भी जाओ, you see the cotton shrinks, but this one does not shrink, and people have come back and told that to me. Okay. It has mirror placements, which is very minimal yet elegant. Not the Navratri type, but something that you can wear daily and something that is not in your wardrobe. Okay. So that is what I bring to the table now. So the question was कि how do you start something of this sort या हाँ. क्या? हाँ, तो बेचने आना चाहिए से मैं ये बोल रही थी कि वो तो मैं कुर्ती लाई, धीरे धीरे मैं उसमें और वैरायटीज लाई. एट एक पॉइंट जब सैचुरेशन आ गया, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग बेडशीट्स लाओ, वहाँ की बेडशीट्स अच्छी है. Okay. अब मैं वो ले आई. तो अच्छा. वो 11 लाई थी मैं पहले. विद इन द फर्स्ट डे 9 बिक गई. Okay. तो कुछ भी बेचना आना चाहिए. You have to have the skill that what product you're making, you're sure that you'll be able to sell it really well. Make it a little different from others or create the hype around it. ऐसा कि लोगों को लगे हाँ ये तो मुझे चाहिए. The way I make reels and everything, it interests people, I think, to then come to my place, shop and have that experience what others are having, what they're viewing. तो वो है. And yeah, I'll say use. मैंने तो zero investment से start किया था. As I said, खुद का ही अनारकली बनाया, फोटो डाला,
ऑर्डर्स आए, जो पैसे आए उससे सोर्स किया, टेलर को दिया, एंड दैट्स डन, एंड वट एवर लिटिल प्रॉफिट आई कुड हैव एट दैट टाइम. तो you have to have, if supposedly fashion, then a master ji, your knowledge and your sorted up ki wo sorted ho ki you have all the resources that you can manage a small scale business. और अगर कुछ भी ऐसे करना है in any other field, so you have to know the sales, I think. मतलब I think I'm a Gujarati, so it runs in my blood, the business. So वो आना चाहिए. Yeah. Nice. And you have to have good contacts, you have to build a network with everyone. So all my aunties are very close to me. Yes. Nice. About like sourcing, how do you approach like the vendors or who are making this? How do you do that? So if you go to say Thane or any other area, or even in Mumbai, Bandra, अलग अलग टाइप के वेंडर्स होते हैं, कुछ वेरी एक्सपेंसिव, कुछ मीडियोकर, जो भी. तो यू हैव टू गो टू वेरियस मार्केट प्लेसेस एंड एक्सप्लोर. हर जगह के मटेरियल हर जगह मिल जाएंगे, मतलब ऑल टाइप्स यू विल फाइंड. देयर इज वन प्लेस इन सरोज करके है थाने में, यू फाइंड रियली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. इट्स एक्सपेंसिव बट यू नो द क्वालिटी इज नाइस. तो यू विल हैव टू एक्सप्लोर द फैब्रिक वेंडर्स खुद से, मार्केट प्लेसेस जा के थोड़ा खुद से ट्राई करके व्हाट फैब्रिक्स आर वर्किंग, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है. सो ऑल दैट यू हैव टू फिगर आउट, बट दैट विल ओनली बी व्हेन यू प्रैक्टिस इट. So start practicing घर से ही, make clothes for yourself. I remember when I was small, I used to go to boutiques to get my dresses done, and that would be very inspiring, the way they did measurement, the way they told the master जी कि ये लिखो, ऐसे लिखो, इसकी sleeve ऐसे करो, and then I used to say मुझे ऐसा neck चाहिए. नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता. तो I make sure मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोलती हूँ कुछ भी हो सकता है, आप लाओ, हम बनाएंगे. But हाँ, all of that really fascinated me. तो for sourcing, just do a lot of trial and error से हो जाएगा. Yes. Okay. And you said about customization. So any like trends or specific things you can share about people asking for customization? So client is God is what I believe, and whatever they want, I make sure I give them. I give them my advice, I give them my references, but because at what level I'm doing, I don't follow the trend forecast per se that the world follows, because I mostly like it to keep it personal with each client. And one thing, that a biggest customization order that I had was Naitik Nagda in the first year itself of my label. So he's a drum artist in Thane. A lot of people know him. In Mumbai also, if you search him, you'll know him. So he approached me on Instagram, and I couldn't believe it कि कोई blue tick वाला मतलब अभी आ गया है DM असांजो पे, अभी पहला ही साल है. तो okay, I said hi, and I've met him, like I've danced during Navratri at his shows. Okay. So then him texting me is like a full circle कि ये कैसे हो रहा है. So I said okay, ऐसे ही होगा. Then he said will you do outfits for me, ऐसा सब. तो मैंने पहले मम्मी पापा को बोला कि okay, I have a text from him. तो उन्होंने बोला नहीं, उनके मार्केटिंग में से किसी ने किया होगा, और PA और समथिंग, इग्नोर इट और सी व्हाटएवर. तो मुझे आ गया गुस्सा. मैंने बोला ऐसा नहीं है, वो खुद ही है, वो ही मुझसे बात कर रहे हैं. मैंने बोला प्लीज ऐसा भेजो, हाय नीति, दिस इज मी और व्हाटएवर, टू शो कि इट्स यू. तो ही एक्चुअली सेंट इट. Okay. And then my parents were like, okay, yeah, this is true. Then we talked, and they said that would you customize some outfits for me, and we are fresh designers out of college. तभी actually मेरा graduation show का collection चल रहा था. So I told him that I'll take some time, but the moment my college is done, I'll start with your project. तो वो हुआ, and then they actually came home. We discussed a lot of things, and then I've made anarkalis for him, like anarkali outfit that he styled with a turban. I've made a cowboy outfit for him. I've done one black decent, like a royal outfit for him. So he was very open to trying anything and everything on stage. And not only him, but equally his wife and his kids are very experimental when it comes to fashion. So the entire family was like a big chapter for me to experiment whatever I want to do on a stage. Oh. So a lot of people seeing those outfits and loving it
you know, him in Anarkali playing that dhol with all Hmm. that flair. So that was my biggest, you know, project of exploration कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. So I sourced fabrics from various areas, made designs, and the entire process was really fun. And then in the end, to see it on stage was something else. And Yeah. you can see it on my page on Asanjo by Neeti on Instagram. You can just check out his outfits, his wife's outfits, and I'm sure you'll love it. I'm sure it was like a very proud moment. Oh yes, yeah. I can still like, you know, it stays in my head rent free. That is amazing. Um, let's come to like how do you know follow कि हाँ मुझे ये करना चाहिए मुझे अभी you said the spread of like what did you say कि the frill. हाँ, वो अनारकली is Anarkali. basically a garment with. So he really is fond of Ranveer Singh. So I Okay. then took images of Ranveer Singh and you know, what style does he run around, and he's Huh. the most, you know, trendiest person. He can wear anything, pull anything off. Yeah. So then I asked him, would you wear an Anarkali? He said, yes, of course, I don't mind. Okay. So the concept of a drummer playing a dhol in that flair with an Anarkali is something else. So your idea has to be different. Then the cowboy idea, well, he gave me that, you know, I want to do one cowboy look, will you do it for me? So it's the exchange of ideas and then bringing it to life is what I do. Okay. And then एक बार you design for a celebrity or someone who's known, you automatically get known. Hmm. You know, people talk about you or हाँ. they like it, and then that, you know, creates a path for you. No. तो फिर सेकेंड ईयर में भी पूरे 9 दिन आई हैव डिजाइन फॉर हिज वाइफ. ही हैड स्पॉन्सर्स सो आई कुडंट डू फॉर हिम, बट ऑल 9 days आई हैव डिजाइन फॉर हिज वाइफ. एंड इट वाज सो लास्ट मोमेंट कि सिंस शी नोज कि फिटिंग इतनी अच्छी है, शी वुड सिट विद द मेकअप डन, आउटफिट बनता था, शाम में घर जाता था, शी वुड वेयर इट एंड लीव फॉर द Oh. शो. तो इतना मतलब हेक्टिक येट फन येट द कॉन्फिडेंस की हो ही जाएगा, देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम ऐसा. Wow. That is amazing. You said it is hectic yet fun. So day to day, how do you feel running Asanjo? So my parents have this complaint that मुझे एक proper 9 to 5 बैठ के काम करना चाहिए, अच्छा. but मैं कोई different ही clock पे चलती हूँ. मैं थोड़ा late उठती हूँ. Then I start my work. If there's a client lineup, then I make sure कि okay, I have to attend them. If not, then I try to see what next I can customize or what can I bring to the table or what can I launch in my brand. And now it's not just about clothes. I'm going out there with bed sheets, as I said, with sling bags, with whatnot. मतलब मुझे जो भी I believe that the handpicked choices that I'm making are liked by people. So I'm now vouching on it. कि okay, this is something I've picked. Now you see if you like it or not. So this is another ball game, and the customization is there. But this is the season where वो start होता है festive में. So now when Navratri, Diwali ये सब आएगा, that is when it'll peak. Like people will start making outfits. So this is the gap that I have to cover. So here I do my sales. Last time it was the Lucknowi collection, good for summers. Now it is the Kutch collection. Okay. So that is how I plan around my year. And otherwise my day is mostly, if there are clients, then that. Otherwise I keep looking at new things, what I can do. But I would also like to agree that yes, if I put more effort into this, I could be, you know, growing a lot more. But I'm taking it easy as of now, and I'm comfortable, which I have to now break very soon. Why would that be very soon? To make sure that, you know, it's growing. Right now I'm okay, like I'm happy and all, but it's not that I'm free at nights. I'm editing the reels, I'm constantly posting it. So social media is also a task, Yeah. and then that's there. But I won't count it as a lot of work because that is what I like doing. तो रील्स बनाना तो अब मैं रीलर बन चुकी हूँ. वो मैं आसानी से बना लेती हूँ. Now I have people requesting me that एक ऐसी रील बना दो कि क्या किसी का बर्थडे होता है, तो मतलब Oh. उन्हें लगता है कि ये रील ही बनाती है और ये बाकी का काम ठीक है, बट ये रील तो बना लेती है.
अरे मेरे मम्मी पापा खुद अगर वो ट्रिप पे जा रहे आ रहे हमारे लिए एक रील बना देना तो वो मेरा ऐसा साइड का काम हो Side गया hustle हो गया। हाँ हसल ऐसे so that's there but हाँ social media is there clients है then to manage the tailor to keep communicating with him on designs and everything and I would also proudly like to say that because of this I'm giving employment to a lot of people the VFast guys जो deliveries करते हैं then my tailor my fabric vendors um, and I don't know a lot more maybe but that end of the day is very nice कि okay बीच में तो मुझे ऐसा लगता था should I do a job ऐसे अच्छा, वो वाला आ गया था but I'm happy here and उस पे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि योर फ्रेंड्स माइट बी डूइंग जॉब नाउ, हाँ तो they're all into jobs and they're discussing salaries हाँ। वो बोलते हैं छुट्टी नहीं है और मैं बोलती हूँ मेरा तो कोई छुट्टी का सीन नहीं है ऐसे चलो I'm ready unless clients है तो I can't but हाँ। तो वो एक डिफरेंस ऐसा जो आता है तो मुझे लगता है मे बी शुड आई एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ द टेबल या बट देर ऑल्सो सम डेज वेरी सैड रिगार्डिंग द बॉस और द वर्क दैट देर इज और नो लीव्स तो फिर on that spectrum I feel like I'm very happy I'm always excited about meeting a new client or doing my work so either wo content or happiness and there is a lot of profit let me also tell you that so a good amount of savings also and हो जाता है if I do more then obviously I'll be able to achieve more मेरी अब तक कोई वेबसाइट नहीं है मैंने as such marketing में कुछ पैसा नहीं डाला other than just sometimes boosting the reel तो वो सब मैंने नहीं किया मैंने कोई प्रॉपर स्टोर नहीं डाला है अभी पूरा होम ग्रोन के हिसाब से इट्स रनिंग इफ आई टेक इट यू नो टू दैट लेवल आई थिंक इट कैन गो बियॉन्ड नाइस, तो फोमो होता रहेगा जॉब अरे बहुत होता है मैं घर पे कितनी बार ऐसे बोल देती कि मैं साइड में जॉब भी कर लूँ क्या फिर मैं खुद ही सोचती थी कि इतना ट्रैवल करके जाना है ना देन व्हेन विल आई फोकस ऑन माय लेवल एंड आई आल्सो एक्चुअली अप्रोच जे वॉकिंग मतलब we were in talks and I was supposed to join there. Jaywalking is a company? हाँ, Okay. it's a brand by मतलब they make t-shirts like Okay. premium t-shirts. तो I was supposed to join there but जब join करने का chance आया तभी नवरात्रि आ गई मेरी season आ गई मैंने बोला now I can't because I have to focus on this and then there's also a lot of conflict कि where will I focus more and all of that. Timing. But हाँ, I've done internships for Okay. a little bit of experience during college under labels. So that's there. But maybe in future if I might take up a job or something, let's say, I don't know. But this is the only way I want to go. Okay. That was Asanjo and Asanjo ka future and Asanjo kaise chalta hai. Let's come to Neeti and Neeti ka future. What do you think you want to do in the next, I don't know, 10 years? So I am planning for masters. Let's see if that works out. Then I'll obviously get a degree. Then comes the job experience again. Right. Maybe in a new country, in new experiences. That would actually break me out of my comfort zone. But to leaving this baby here, the Asanjo that there is something that I'm not ready for. But there's also a scope that I'll be able to expand it a lot more outside. So that's in the plans. Otherwise, something that I'd like to say is during these 2 years, my family has been super supportive. My friends have always been super supportive. Like they're always there. मेरे first courier पे मेरे दोस्त चले थे. नाम decide करने पे दोस्त थे. अभी recently we had gone to see the customized bags. तो अब तक मैं normal bags दे रही थी. Now there'll be bags with the Asanjo name on it. Okay. So I'd seen references of Manyavar and everything. Then I'm constantly discussing it with my friends. कौन सा अच्छा तो वो दोनों अपना काम छोड़ के मेरे साथ चले थे बैग वाले से मिलने. Okay. तो अभी न्यू चीज़ें ऐसे हो रही हैं which brings me to saying that we're doing sale at Tip Top Plaza on Yes. 17th and 18th May. It'll be really good, the collection. I'm bringing so many new things and I'm just excited to give it to them in the Asanjo bag now. So yeah, Wow. if you're around you all should join. Yeah, I don't know if this episode will be out till then. Yeah. But if not, then please But do. then you can follow me and you can Yes. stay updated for the further exhibitions that I'll be doing. Yes. Very recently I'd also gone to Delhi
Okay. for a big exhibition that was Designers India. So that was also me stepping out of my comfort zone. मैं first time Delhi गई थी. The experience was great. The Okay. food was great. खाना तो हम पूरा टाइम खा रहे थे, ऐसे लग रहा था खाना खाने आए हैं, एग्जीबिशन साइड में चल रहा है. तो yeah, तो now I'm exploring that side also कि apart from home I want to capture more areas Hmm. and spread Asanjo. Out of all the 2 years that you 2.5 years approx that you've worked on Asanjo, has there been a time where it was like बहुत ही बुरा है यार, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो रहा है? हाँ, मतलब ये सब तो अच्छी चीज़ है एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ डिजाइनर्स. मैं बहुत देखती हूँ, मैं जा जा के मिलती हूँ, तब मुझे भी उन्हें देख के लगता है यार इनका तो सब सही चल रहा है, कुछ तो बुरा होता होगा ना इनमें भी, जैसा मेरे साथ हुए है कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस. Okay. एंड फिर वन सच टाइम आई वाज मीटिंग अ डिजाइनर और मेरे सामने एक बुरी चीज़ हुई दैट द क्लाइंट फ्लिप्ड एंड स्टार्टेड सेइंग बैड थिंग्स अबाउट द डिजाइनर और मैं वहीं बैठी हूँ. Then I realized, okay, ये सबके साथ होता है. It's not just me, because I was a startup. मेरे साथ भी हुआ है when I've put a lot of work, hard work in my project, and the client just flipped in the end and said, no, this is not something we wanted. So that is really heartbreaking. And apart from that, they can be mean sometimes, and I'm really an emotional person, so मैं ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हूँ, उससे इफेक्ट हो जाती हूँ कि ये कैसे हो गया, शिट आई हैव टू मेक दिस राइट. बट दैट ओनली टीचेस यू नेक्स्ट टाइम. जैसे एक बार अगर मानो कुछ गलत बन गया या कुछ स्लीव गलत हो गई, मेक श्योर द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डिजाइन इट यू गेट अ साइन और approve it from the client कि this is what we want. So then they are not in a position to then change their mind. Something of that sort. Or there could be sometimes money related issues also कि no, we'll only pay so much when you've invested a lot more into that. So the traveling, the sourcing, the roaming around, the delivery, all of the back work that goes, that the person might not realize at times. But that's okay, that's how you learn, I think. And मतलब मैं तो जब भी रोई हूँ, मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि okay, forget it, we're here, just jump to the next step now. Focus on the next thing that's there for you. तो हाँ, लॉसेस भी कभी कभी होंगे, बैड एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बट आई एम श्योर दे विल टीच यू. जब मेरा कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने फिर वो बुक बना ली प्रॉपर मेजरमेंट की, या फिर मैंने मतलब कुछ ना कुछ उससे अपग्रेड ही करती गई हूँ ऐसे. तो विल टीच यू, जस्ट टेक इट एज अ लेसन ऐसा. Like कुछ गलती भी हो गई तो learn from हाँ, it. एंड use it. बी वेरी, अगर मैंने कुछ गलत बनाया है, आई विल गो बियॉन्ड माई वे एंड फर्स्टली मेक इट राइट. कि नहीं, अगर इफ आई हैव टू सोर्स द मटेरियल अगेन, आई डू दैट. तो मेक श्योर इफ इट्स योर मिस्टेक यू अग्री एंड यू सॉल्व एंड क्लियर इट. इफ नॉट, देन यू कैन कम टू अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे फिक्स करना है. बट जस्ट लर्न, एंड अगर मिस्टेक है, अग्री एंड सॉल्व इट एंड क्लियर इट एंड मूव अहेड. या डोंट लाइक वो क्लाइंट को गलत मत बोलो कि अरे हमारा तो कुछ गलती नहीं, आपकी ही गलती है. हाँ. दैट विल नॉट वर्क फॉर यू देन. Nice. And one of your USPs is the connect with your client. Yeah, I'll share this. So I have a client that I'm very connected with. तो थोड़े दिन वो ऑनलाइन नहीं थी, वो मेरी रील्स नहीं देख रही थी. तो I asked her क्या हुआ आंटी. तो she is like, okay, हाँ, कोई उनके घर पे sick था. So that is the level of connect. And Okay. now recently she also on a video call told me love you beta. So this is something that really makes me happy, that to have that connect. Maybe this is not very normal कि मैं घर पे भी इतना ज़्यादा बोलूँ या ऐसा या कोई और. But a client saying that to you, it just made my day. And I have a lot of texts that have these sweet messages that you're doing good. अभी भी बहुत सारे लोग congratulate कर रहे हैं for the exhibition. So there's a lot of support. You have to create that connect with your client, and then it's easy, very easy. So मतलब ups and downs तो है, हाँ, fulfilling हाँ, बहुत है. yes, हाँ. If you're enjoying it तो बहुत मज़ा आता है और relaxed है, मतलब सही है. But there has to be the hustle. You have to keep doing that to keep growing. ऐसा. Nice. और मेरी एक सारी अक्षय कुमार की एक मूवी के प्रीमियर के लिए भी गई थी. द साइड कैरेक्टर वाज वेयरिंग इट. ये तो छोटी छोटी चीज़ है जो हुई है, दैट मेक मी, मतलब दे मेक मी हैप्पी सोच के.
फिर there's a content creator सुखमनी गंभीर जिसको मैंने भेजी थी एक साड़ी. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट. तो इवन शी wore it thrice beautifully. मतलब कोई होगा तो एक बार शायद पहन के ना भी पहने, बट she actually uses it. So the product is good. वैसे सब तो that's nice. Amazing. That's like one of the few things that you'll always remember. Yeah. And when you asked me about Neeti Gangar, I'm also a social media influencer, a micro influencer. So I've worked with brands like Myntra and big brands. You could see it on my page. वो उन्होंने भी मुझे सिखाया that how does a brand work. वो मुझे इतनी चीजें भेजता है. So now I have also the responsibility to do the same for my brand to expand it. Myntra इतना बड़ा हो के अगर ये campaigns कर रहा है, then I'm really small. Then I should start early. So even the influencing bit taught me a lot that how to now मैं कैसे target करूँ लोग. That was also a learning. So technically you do two things. मतलब influencer वाला जो side है, which is about Neeti. हाँ. And also Asanjo. उसमें तो प्रोडक्ट्स आते हैं, फोटो शूट करो, डालो और यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ. तो इवन दैट पार्ट इज रियली फन. शूट करना होता है. एंड नाउ मैंने मम्मी को वो एंगल्स सिखा दिए. पहले तो मेरे दोस्त कर लेते थे, बट नाउ इफ यू इन डिफरेंट प्लेसेस तो मम्मी को आता है. तो नाउ शी इज ऑलवेज रेडी टू शूट और वो काम हो जाता है. फिर वो प्रोडक्ट्स मम्मी भी यूज कर लेती है. फिर पापा भी डिमांड करते कि हमारे लिए भी कुछ आना चाहिए, तो उनके लिए भी मिंत्रा से ऑर्डर कर देती हूँ. तो बट याद अब मोर ब्रांड्स लाइक मिंत्रा पे टॉमी हिलफिगर के मंगाए मैंने, न्यू बैलेंस के मंगा लिए. तो वो सब. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आई वर्कड विद अदर ब्रांड्स. जो गंगाराई नेशन के साथ भी किया था. वो तो मेरा ही मतलब नाम टाइटल वही है, बट वी आर नॉट रिलेटेड. बट या I was going to ask relation में. no. फिर एक कोई चॉकलेट ब्रांड थी, उन्होंने डिच द गिल्ट या कुछ. दे हैड गिवन मी 6,000 फॉर दैट रील, चॉकलेट खाने के. और उसकी रील बनाने के. तो इवन दैट इज वेरी नाइस. तो अभी सोशल मीडिया आई टेल यू इज वेरी पावरफुल. ऑल्सो अनदर एक्सपीरियंस इज मेरी नेबर थी, उनकी कॉलेज मेट आई थी उनको विजिट करने. तो वो मेरे घर भी आई सेल देखने. तो मैंने तुरंत उनकी रील डाल दी. तो अब ये रील मेरी एक और क्लाइंट ने देख ली. एंड शी हैपेंस टू बी हर टीचर, 3rd ग्रेड की टीचर. तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे ये तो मेरी स्टूडेंट है, कैन आई टॉक टू हर. एंड दे स्पोक. एंड देन मैं और वो हमने उन्हें विजिट किया, मेरी क्लाइंट को. तो दैट्स हाउ Asanjo is also helping people to connect. ऐसा एक बार नहीं, 3-4 बार हुआ है कि अलग अलग जगह से लोग कुछ किसी की रील देख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं. तो इट्स वेरी पावरफुल. वी हैव टू यूज इट लाइक यू आर यूजिंग इट फॉर द राइट purpose. We have to do that. You said about clients and majority of your clients are aunties. हाँ, mostly. I mean, aunties के साथ ऐसा experience क्या है? What is something common that you see across all aunties? So एक तो सब बोलते हैं कि हमें पतला दिखना है. That's there. So we have to design in a certain way that their body looks flattering. Apart from that, you get to learn a lot. जब भी आप अपने एज से किसी थोड़े भी बड़े के साथ रह रहे हो, you learn a lot. The way they speak, the way they handle things, the way they manage their time. तो it's always a learning. And they're all very sweet. मतलब बेटा बेटा करके पूरा प्यार मिलता है. एक तो छोटी हूँ, तो it's a big advantage for me कि. और अब अगर कभी कुछ गलती भी होती है तो at least I have that thing कि they will trust me that I can resolve it. In the past cases जो भी, अभी तो बहुत सीख के अच्छा हो चुका है. But हाँ, it's a very family. और ये नहीं, बहुत unknown लोग भी है. Even they have been very sweet. Recently Instagram से एक डोंबिवली से client आए थे. She almost purchased for around 15 to 20,000 का सेल मेरा हुआ उस एक क्लाइंट से. And she'd come from डोंबिवली. Wow. That's from Instagram. And I have a text from her saying that it did not feel like we met for the first time. She bought her kids also. उनके लिए भी मतलब कपड़े लाए थे, तो we did a shoot and everything. तो you just become family with them and it's just growing now. Word of mouth से बढ़ता जा रहा है. New लोग आ रहे हैं, connect हो रहे हैं. तो but you have to be soft spoken, nice and everything. That is actually inspirational because you can say
while running. Your a mom salon. is my client also. Yeah. And I've done a shoot with her also and she looks amazing. मैंने तो उनको बोला आंटी आप प्लीज अगर ऐसे कभी भी फ्री हो ऐसे ही आ जाओ और हम शूट कर लेंगे. And even she is an entrepreneur. She Yeah. does a lot of so Yes. even she is capitalizing on social media now. Yeah. So it's great. She also sells saris now. Yeah. She has been doing few things here and Yeah, there all yeah, the time. yes, yes. And now And she's we've started seen that, selling yes. saris. And which is why she can also understand me Okay. now. Hmm. And yeah, कि मैं मतलब why there's a certain price or something, she'll be able to understand because she knows what goes हाँ. behind it. That's Behind the scenes. हाँ, वही. So, Nice. I was saying कि like within you there are many job profiles in like you are doing everything, right? हाँ. So you said Oh, and I also make car reels for my dad. okay. हाँ, तो he sells cars, तो उधर भी मुझे रील बनाने बुला लिया जाता है. And then we have a page called नीति Cars. Okay. तो वो तो मुझे ये भी बोलते हैं एक बार तू एक कार तो बेच के देख, तुझे मजा आ जाएगा लाइफ का, एक प्रॉपर्टी तो बेच के देख. तो ही इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू Push it. वाइडर माय होराइजन कि Okay. हर एक चीज मुझे करते आनी चाहिए. Oh. एंड आई हैव सीन हिम स्पीकिंग विद क्लाइंट्स, तो वो बहुत अच्छे से डील क्रैक करते हैं. तो मैं कहीं ना कहीं वो ट्राई करती हूँ अप्लाई करने का कि आंटी आप ले जाओ इसको, कुछ नहीं होगा, कुछ Okay. हुआ तो मैं यही हूँ, आप ले आना. दे लाइक ओके हाँ वी हैव समवन. Like it's like sales, social media, uh, operations, supply chain, so many things that you do. So that is quite amazing. Kudos to you. बहुत ही बढ़िया है. But I want to expand a team, but the problem is I don't think I can trust anyone with it. कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वो करेंगे. So I don't know what to do about it. फ्यूचर में you'll have to क्योंकि अगर एक्सपांड करना है तो अकेले Yeah. कितना करोगे. Yeah, that's there. Let's see. Hopefully you expand to the world, Yes. across the globe. Yes, you are my next client. अरे definitely. Definitely. I would want a kurta. Sure. I am very short on kurta. मेरे पास ज़्यादा है ही नहीं. ठीक है. God order. So before I let you go, it has been an amazing conversation. I have a small game to play with. I thought you will say I have a gift, but okay, game works. गिफ्ट बाद में, कुर्ता ठीक के है. बाद में. Oh yeah, the money. The game is Would You Rather. Okay. And I'll ask you 3 Would You Rather questions. You have to say which one and why. So first one is, would you rather make ethnic wear clothes or Western clothes? Ethnic, anyway. If you're staying in India, capitalize on that. Okay. And the good thing is people are now bringing in saris and making use of it and creating new ways of that. So maximum use of that fabric. And ethnic is very, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें. The amount of creativity I think is a lot more, and I personally am inclined a lot towards ethnic. Nice. Next is, would you rather want to work with aunties? By the way, I would like to clarify, aunties में मैं कहीं पे भी disrespect के angle से मेरी नहीं आंटीज बोलता. का कुछ भी बोला ना तो क्योंकि when you say auntie ऐसा लगता है आंटी बोल दिया यार. वैसा कुछ and, नहीं. no, I have a client who is 57 or something. She's a Parsi, very sweet. जब भी वो visit करती है तो उनको मैं name basis पे बुलाती हूँ Denise, Okay. because she is comfortable like that. हाँ. तो वैसे, but they're all my gang. Don't call them aunties. So work with your current client type of clients, or work with people who are your age, like clients of your age. So to say, I do have a little amount of client जो मुझसे भी छोटे हैं, and they know that वो टेलर तो मुझे डीप नेकलाइन नहीं देगा, बट नीति दीदी शायद दे देगी ऐसा. तो इधर चलते हैं. तो I have that category also, but I think the target age for me is roughly from girls or boys or anything from 18 to 45, 50 जो भी, मतलब वो एक एज आ गया एक आंटी वाला, because they are using the outfits that we make a lot more, I think. But I want to actually target everyone. अभी तो kids wear भी मैं कर रही हूँ. Okay. तो अभी वो भी attract हो रहा है, and I'm also importantly focusing on plus sizes.
Okay. I want to be the person कि हाँ जो वो बाहर उनको वो comfort नहीं मिल रहा, they should know that this is somewhere we'll get. So Asanjo is the place. And of course menswear, boys सबके लिए. Maybe in my graduation collection I had also targeted gender fluidity. So I had made Okay. garments that दोनों पहन सकते हैं और anybody could wear it. तो हाँ. So Okay. that's one thing that I want to do everything. Hmm. Yeah. Inclusion है हाँ. आपके clients में. हाँ. I mean, That would be a good way to say it. so the last question is, would you rather work for the biggest fashion client in the world in your category, ethnic wear, as a manager, like the top, or work on a subject for the rest of your life? So I personally love Asanjo, but I feel if I get the opportunity to work somewhere on that position, I would like to take it up, experience, leave it, and then come back to Asanjo and Okay. apply the same skills here. Hmm. So if that would be an option, I'd again सब करना चाहती हूँ तो फिर मुझे वो भी करना है for the experience. But this is like a baby, so उस पे ही focus करके उसी को grow करना है. Nice. So I guess the question is like 9 to 5 versus your. Oh, वैसे नहीं I'm very happy in my flexible timings. मैं कभी भी कहीं भी हो सकती हूँ. मैं कभी भी clients को I have attended clients at 12 p.m. also. जो working है उनके लिए I make sure that वो खाना वाना खा के फिर आ जाए क्योंकि मैं तो जाग ही रही हूँ. तो you are welcome. तो but my friends and my family कभी कभी मुझे बोलते रहते हैं no you should set a timing or something. But I just think at this point I don't have a privilege to do that. अभी मुझे क्योंकि सबको happy करना है वो target करना है तो I welcome them at any time. तो इसलिए मैं दिन में सो भी पाती हूँ क्योंकि मैं रात में काम करती हूँ. Amazing. I think that has been a really detailed and बहुत helpful conversation रहा ये. Yes. I hope. Because I'm sure anyone who would want to start a business, do something right out of college, and do something of their own, they would be benefited from this. Yeah. Because this was a very detailed insight into life of a business owner, Yes. life of a label owner. Yeah. Thank you so much for doing this. Yes, thank you so much for having me here. This is my first podcast, so I don't know how it has been, but I hope it helps someone. And if to sum it up, just start something. If I just want to ask you, if you wanted to do a business, what would you do? As in, क्या बेचूं मैं? हाँ, क्या शुरू करेगा? I don't know. Maybe something in sports. Yeah, that's good enough. Maybe jersey का ऐसा कुछ. Yeah, so just start it and have a good family and friends. All support should be there to keep motivating you. Have a dream that you want to achieve, and it'll be good. You're good to go. And do follow Asanjo. Then you're good to go. I would like to add to that. Key, what would I do? Sports would be like if I want to sell a product, but if I want to do like a business, I might take up something on the same lines of above the average. Yeah, Key. you're already selling something. The content, yes. So that would be what I would like Yeah. to do, putting it out there in the universe. Yeah. Let's see. This legit has been one of the best interviews because flow mein, it was a really nice conversation. Thank you so much for doing this. But now after this, I'll think, oh, मुझे ये भी बोलना था, ये भी बोलना था. So you can come back on season 4 or sometime later. We'll do another episode while maybe you are working for some European client or Yes. some foreign client or some big client. Yes, hopefully. Thank you so much for doing this. Thank you so much for having me. Please follow Asanjo. Also follow Neeti Nagar. Yes. See that whatever I've said is 100% true. Just go and verify that and shop a lot. Yeah. Thank you so much, guys, if you have made it till the end of the episode. I'm sure this episode helped the people who want to start something of their own. Hope I looked nice. And that's it for today, guys. Thank you. Bye-bye.
Hi. Oh, this is the outro. I mean, I thought intro shoot कर लिया है तो ये भी कर लेते हैं. But इधर तो कोई देख रहा है like hello. अगर देख भी रहे हो तो वैल्यू एडेड जो भी था पॉडकास्ट हो गया है. यू कैन लीव. सी यू इन द नेक्स्ट वन. कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन. बट अभी अभी मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों. Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye bye.